Now, this particular portion of close packing in crystals, what we saw last time in part 1, was with respect to those systems where all the atoms were exactly same. Let us say all atoms are only magnesium and it follows, say, hexagonal close pack structure. All atoms are only sodium. It follows, let us say, body centered cubic. When we consider one single element, all the atoms are going to be of the same size, radius, atomic radius will be similar. Now the thing is, we are going to have here a part wherein different ions are present. Now, a cation is usually smaller than an ion. So in this case, how we will arrange the atoms, what type of systems they will follow, that is what we are going to only study today. So in this part, first we will quickly revise what we did last time, that was void space. And we had seen, if you remember, whenever number of atoms are arranged in one single plane also, there will be some empty space remaining. And that empty space, we call it as void space. If, let us say, in that particular system, there are n atoms. What do you mean by n atoms? You know, if it is face centered cubic, the value of n will be 4. If it is body centered cubic, it will be 2. And if it is simple cube, it will be 1. So that is that number n written. So as many atoms are present in the system, same number of octahedral voids are generated. So in FCC, there will be 4 octahedral voids generated. And there will be double the number of tetrahedral voids generated. We had seen all these things in the previous lecture. I'm just revising some points because we need this again. This is the same example which we saw last time. For FCC, you can similarly make statements for BCC. For BCC, if this number is 2, 2 octahedral, 4 tetrahedral. For simple cube, it is 1 atom, 1 octahedral, 2 tetrahedral. It's that way. Then we come to the small difference in tetrahedral and octahedral voids. You can see here, this is made of 4 spheres. This will be made up of 6 spheres. Coordination number is the same thing, 4 and 6. Then we even saw this particular equation. Now today we will be having numerical problems on this part, which is only in the NEET and JEE syllabus. So deliberately I did not do all these things last time. So radius of a tetrahedral void is given by 0.225 into R, where that R is the radius which are going to make the tetrahedral void. Same way here, it's going to be 0.414 into radius. Overall, tetrahedral void will be a smaller one compared to an octahedral void. And here we know the numbers as such, how many are produced. Please go through these paragraphs quickly. You can get usually some true or false statement, identify the statement questions on this part. Now this section also we did last time a little bit, but I'm giving some better diagrams here from NCRT, in fact, little modified diagrams. They ask you where the octahedral voids are located. So this is a diagram which will give you the position of octahedral void. One you can see in the body center, which is this one. Then you can see 12 octahedral voids at the edge center. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then we count about their contributions. Each void will be shared by, and the edge will be shared by 4 unit cells. That means it is going to be just 12 into 1 upon 4, it will be 3, plus inside body center 1, that makes it 4. That is how we said that in face centered cubic, there are 4 octahedral voids present. For exams, you should know, for NEET and JEE, you should know the positioning of the voids. Edge center 12,
body center 1. Remember this statement by heart. Same way, I will show you location of the tetrahedral voids also. In CCP lattice, there are these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4 in the upper plane, 4 in the lower plane. These are the total 8 octahedral voids which are present. If you see at one body diagonal, you see this is the body diagonal. At this body diagonal, there are 2 tetrahedral voids present. Another body diagonal, there are 2. So that's why there are totally 4 body diagonals, each containing 2. That's how 8 body diagonals are present. Now we come to the topic of this whole section, that is structure of ionic solids. As we know, ionic crystals are going to contain cation and anion. Their sizes are going to be different, their charges will be different. So you will have attraction in opposite charges, there will be repulsion in the similar charges. So considering the attraction repulsion, considering the ionic size, geometry, everything, then packing has to be done. So this cubical close packing, FCC, BCC, all these things depend on not only the size but also charge. So considering this, they again define a term coordination number. We had seen this coordination number last time also. Here, one particular anion is getting surrounded by how many cations, or one cation getting surrounded by how many anions. Both the ways you can define coordination number. Most of the time, cation center is always considered. So they consider cation is in the center, it is a small ion, larger anion is surrounding it. So one cation is getting surrounded by how many anions? That is called the coordination number. So considering cation and anion as their sizes, you see, imagine this blue circle is a cation and a red one is anion. Depending on their sizes, you can imagine different coordination numbers. So for consideration, I'm keeping cation size fixed and I'm changing different anion sizes. So if I consider perhaps a very large anion like this, its coordination number would become 4. Now imagine that instead of such a large anion, I take a smaller anion. Obviously, more anions will be placed. Coordination number will increase. If I still reduce the size of the anion, you can see I will place more and more anions. So you can have different things. Cation keeping same, different anions of different sizes will be having different coordination number. Now out of this, which system is more stable, which is less stable, that also we need to see. So to understand all these things, we come to a rule known as radius ratio rule. So scientists have not only just kept the coordination number as a concept, but they have considered the radius ratio. Considering all the possibilities, radius ratio decision is made on these conditions. Number one, anion and cation are assumed to be hard spheres. Always they will touch each other, but only cation and anion, not two anions or not two cations. Anions generally will not touch, but they will be close enough so that they will have enough force of attraction. Cation should surround itself with as many anions as possible so that you can have a proper closed pack structure. Moreover, when a cation is very small, then neighbors will be present and you will have either of these following three conditions. So which are the three conditions you can see? You can see this is the one where you can see extremely large anions are present, and this is a cation here. This one little different, and this is one. Now it's written here, this is unstable, this is stable.
Can anyone tell me why this seems to be unstable? Why this seems to be stable? Anybody? And there's a lot of stress between the atoms. These are Steric ions, hindrance. first of all. Yes, correct. Tell me. The steric hindrance. No, no, no. You are forgetting. Repulsion. These are ions. Yes. Repulsion. Negative charge, negative charge, negative charge, negative charge. They are so close to each other that all these negative will repel each other. Once again, get into your mind very clear. We are not talking about spheres. These are charged ones. So obviously, here when you consider all negative charges touching each other, this seems to be an impossible thing. This would be the best one where coordination number is good as well as anions are not touching each other. So when we say radius ratio, this is what is meant by radius ratio. Cation ratio, sorry, radius divided by anion radius. And to get a best system, what do we see? We can see here that number one, larger is the size of the cation. You can see I am increasing the size in the diagram. Greater is the radius ratio. You can see the cation size is large, means your numerator is increasing, radius ratio will increase. More is the stability, greater is the coordination number. This is one of the rules, what we call as radius ratio rules. Now to decide exactly what sort of system we get, we have this table to by heart. Now watch this table very carefully and you have to remember it by heart for NEET and JEE. This particular cation upon anion ratio, if it is less than or equal to 0.155 or more than 0.225, the system can have coordination number 3. System will have a structure planar triangular. Same way, when the radius ratio is in the range of 0.225 to 0.414, it's tetrahedral. 0.414 to 0.732, it's octahedral. 0.732 up to 1, it's body centered. You will mostly get most of the numerical problems on 4 and 6 numbers. So if you better remember these 4 numbers, 225 to 4141 range, 414 to 732, most of your problems are solved in exam. Is this perfectly all right? यहाँ तक ठीक है. Simple है radius ratio rule. Let us immediately take numerical problems, how they are asked in exam. These are all the problems from your notes only. Classwork का जो box problem है वही मैंने यहाँ पे solve किया है. So I will not separately send you an answer sheet of this. This PDF only I will send. Examples also. Yes, examples mostly एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हम लोग अभी एज सिंगल एग्जाम्पल करने वाले हैं. So that's why if you remember, but in past exams I have never seen any example based on this. You usually get only numerical problems. So how do they ask a question on it? This is one way of asking. Radius of cation 95 picometer, anion 181 picometer. Predict what is the coordination number. So radius ratio you can see here is 95 upon 181, that's 0.524. If I go back for a moment and you see where is 0.524, you can see this comes in this range. So the coordination number has to be 6 and the structure will be octahedral. So unless you know the table by heart, you cannot solve any of these problems. Second one, cation and anion ratio is given. Once again, it's the same problem I have done. Once again, this lies in this one. So the cation ratio number you are getting different, but it's coming out to be 6. Another one, now little different. Coordination number is asked. Cation and anion values are given. Now the answer is 0.933. So this is going to fall in the last number in that table.
So the coordination number is higher, 8, and the structure is coming out to be cubic. Basically, all these things are based only on the table, nothing great. Now comes a little higher level problem. In fact, this is a past JE problem I have taken. Watch very carefully. Solid AB has NaCl type structure. Anion radius is 241 picometer, 0.5 picometer. What should be the minimum radius of cation? Can a cation with a size 50 picometer be fitted into a tetrahedral hole of the crystal? Quite a technical problem. First thing you watch here is they have given NaCl type of structure. Now, NaCl type structure means you should know, first of all, the coordination number. You should know the range of radius ratio. So for NaCl, radius ratio rule is 0.414 to 0.732. Whenever we have been asked a particular case like NaCl, and when you want to take for calculation, you will always take the minimum value in this for calculation. देखो हमेशा ये रेंज रहता है, लो नंबर टू हायर नंबर. तो आप लोग इसमें हमेशा मिनिमम रेडियस जो वैल्यू है वही कैलकुलेशन के लिए यूज करोगे. सो मिनिमम विल बी 0.414. सो अपना रेडियस एनायन का दिया है 241.5. सो कैटायन अपॉन एनायन इज 0.414. उसमें से ये वैल्यू है 241.5 जो दिया है. सो कैटायन का आंसर आएगा 99.81. दैट्स अराउंड 100 पिकोमीटर. सो इतने तक का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं मिनिमम. इतना वैल्यू वो कैटायन का एक्सेप्ट कर सकता है, तो ही उसका रेडियस रेशो एकदम करेक्ट आएगा. I have solved only first part of the problem. Tell me if you have a doubt in this. So, Good. so what if the radius ratio is greater than 1? Then it will go further to the next level. 732 से higher हो गया. 732 तक चलेगा, no problem in that. If it is higher than that, then it will go for the next level. उसके बाद तो जो next उसके बाद NaCl वाला जो है, that will happen. So what we consider in calculation is always the minimum one. Okay. Shall we go ahead? Any other doubt? So, Bolo. so if the radius ratio is 0.732, then it will be on the other category, na? Yes, correct. Not zero. करेक्ट करेक्ट. बिकॉज कंडीशन में हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहता है. देखो तो इसलिए वो एग्जैक्ट 732 मतलब वो नेक्स्ट कंडीशन आ गया उसका. लेट मी शो यू, टेबल में दिखाता हूँ फिर से. ये देख, ये लेस देन और इक्वल टू साइन है. देख, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक, इसलिए हम लोग मिनिमम वाला ही हमेशा कंसिडर करते हैं. So is it possible for the radius ratio to go more than 1? यस, देयर इज मोर देन वन. हम लोग अपने सिलेबस में नहीं करते, लेकिन इससे भी बड़ा शायद मैंने प्रिंटेड नोट्स में दिया भी है. मोर देन वन वाला भी रहता है, लेकिन मोस्टली किसी भी प्रॉब्लम में मोर देन वन वाला आपको नहीं आता है. सो वी डोंट नीड इट, एंड दैट्स क्वाइट अ रेयर कंडीशन आई विल से. चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ने किया. अभी ये व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस. अभी ये टेट्राहेड्रल होल का कैसे करेंगे ये देख लो सेकंड पार्ट में. अभी ये मैंने आपको अभी सेकंड स्लाइड में फॉर्मूला दिखाया था. रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होल इज 0.225 इनटू रेडियस. ये रेडियस हम लोग हमेशा एनायन का ही कंसिडर करेंगे, because if you remember in earlier lectures we did, anions always make the system, cations are fitted into it. anions से अपना सिस्टम बनेगा, कैटायन उसके अंदर होल्स में बैठे रहेंगे क्योंकि कैटायन स्मॉल होते हैं हमेशा. तो ये जो 0.225 आर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग एनायन का ही रेडियस रखेंगे, कैटायन कभी भी नहीं लेंगे. सो ये हम लोग को रेडियस रेशियो मिल गया टेट्राहेड्रल का. अभी इतना साइज टेट्राहेड्रल होल का है, हम लोग को दिया है 50 पिकोमीटर का,
Obviously this will definitely fit into this tetrahedral hole. अगर ये नंबर से 60 पिकोमीटर होता तो हम लोग बोलते थे ये कैटायन इसके अंदर फिट नहीं होगा. एज सिंपल एज दैट. इज इट अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस? मैंने जितने पॉसिबल टाइप से आपके एग्जाम में वो सब एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है. यू विल नॉट गेट एनीथिंग बियॉन्ड दिस. दिस कवर्स एवरीथिंग अप टू जेई मेंस. इवन एडवांस्ड का भी इसमें यही टाइप में आते हैं क्वेश्चंस. नीट तो ऑलमोस्ट इससे भी लो लेवल का है. इज इट अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स? यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो अनदर वन वही है लेकिन थोड़ा और डिटेल में. ये फिटिंग इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होल्स. रीड इट. Bromide is forming a close packed structure. Always anion form a structure. Bromide का size दिया है 195 picometer. Calculate the radius of which cation it can fit into tetrahedral hole. और अगर radius cation का है 82 picometer, will it be slipped into octahedral hole? So now we have to find both the things. So let us begin. Tetrahedral के लिए definition ये इक्वेशन था अपना 0.225 to 0.414 और रेडियस मिनिमम रेडियस है 0.414 इंटू 195 और A प्लस 80.73 है तो A प्लस का है दिया हुआ 82 पिकोमीटर. सो डेफिनेटली इट विल फिट इनटू दैट. दिस वी हैव फाउंड आउट फॉर द फर्स्ट पार्ट टेट्राहेड्रल के लिए. So don't we have to take 0.225? That's the minimum, na? एक सेकेंड. ये हम लोग ने कौन सा लिया है? 0.414 इज फॉर टेट्राहेड्रल होल ना. ये टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होना चाहिए था. एक सेकंड ना. ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.41. शायद ये गलत है. आई विल रेक्टिफाई दिस एंड सेंड टू यू. दिस शुड बी 0.225. देन सेकंड वन देखो. ऑक्टाहेड्रल के लिए ये दिया है एंड वी फाइंड नाउ 82 upon 195.4205. This number fits into this correctly, so this can be slipped into octahedral. I will do the correction of the previous one before sending to you. Now we come to the last part of the topic, that is the common ionic compounds what we see. बहुत सारे कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं. स्ट्रक्चर्स मैंने इनको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है. आप अगर कोई भी जेई और नीट का बुक देखोगे आपको 2-2, 3-3 पेजेस इंफॉर्मेशन इस पे दिखेगा. आई हैव समराइज्ड इट फॉर व्हाट यू नीड फॉर एग्जाम्स. व्हिच स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू सी. टाइप 1 व्हिच वी कॉल एज AB टाइप, मतलब 1 cation 1 anion type of formulae. So under this you have the famous one, rock salt structure, cesium chloride structure and zinc blend structure. ये तीन हम लोग करेंगे इसके अंडर. सेकंड AB2 टाइप. सो 1 cation 2 anion. इसमें सबसे पहला है फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज ऑपोजिट ऑफ दैट विच इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. सो मेनली आपको ये 5 स्ट्रक्चर डिटेल में करना है. Besides this, one extra structure of diamond is there, which also I'll be doing it. Let us see. Besides this, JEE advanced में 3 या 4 additional structures है, लेकिन वो मतलब मेंस में तो कभी आते ही नहीं है, नीट के सिलेबस में ही नहीं है और एडवांस्ड में भी आज तक उन्होंने कभी पूछा नहीं है. So that's why I have not covered it over here. Otherwise, 2 to 3 additional structures are there called spinile and anti-spinile structures. So वो मैं यहाँ पे cover नहीं कर रहा हूँ. First, we begin with rock salt structure. Very simple point-wise information I have given. This is what we have already seen as rock salt. I want something from you. Where do you see chloride ions? Where do you see sodium ions? Describe. Chloride ions are present Chlorides in the mid faces and the corners. at the corners and the center of the face. Very correct. And sodium ions? Body center and edges. एज सेंटर. बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर. तो अगर आपको ये इतना मालूम है तो आप लोग इसके नंबर, इफेक्टिव नंबर भी निकाल सकते हैं जैसे हम लोग पहले करते थे. तो अरेंजमेंट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक एज यू कैन अंडरस्टैंड. लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज नॉट
एग्जैक्टली ट्रू 100%, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एज के सेंटर में कुछ होता नहीं है. So that's why we need to study this specially. So FCC is not a very pure FCC as you used to see earlier. So chloride ions are at the corners, you can see. Sodium ion at the edge center and one at body center. Chloride ions actually center of the face भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है. Coordination number of sodium comes out to be 6, even chloride also comes out to be 6. So sodium ions we can count here. One edge body center वाला single, एज सेंटर वाले, सो 4. इफ यू रिमेंबर हम लोग ने ये पहले भी कैलकुलेशन किया था. सो वी गेट द फॉर्मूला Na4Cl4. सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आर 4. बस आपको ऐसा ही इंफॉर्मेशन हर एक सिस्टम का याद रखना है जो मैंने अभी पॉइंट बोले यहाँ पे. वेयर द आयंस आर प्रेजेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, देयर इंडिविजुअल नंबर, दैट्स ऑल. दिस मच you need to know for these 5 systems. Second we have is cesium chloride system, which is now going to be a different one. बोलो. So what is C number? एक सेकंड, कहाँ पे गया, क्या चाहिए? C number 4th, what is the full form on that? Coordination number. अच्छा, okay. Sodium, one sodium is surrounded by how many atoms? Coordination. So here now you can see much easier system. This is body centered cubic, very simple system. Now you can see cesium atoms, cations, are at the corners and chloride ions in the center. Now here you can see my diagram differs from my description. You will feel ये कुछ गलत है. ऐसा गलत है नहीं बिल्कुल. यहाँ पे आपका सिस्टम देखने का अप्रोच कैसे रहता है, that depends on it. That means right now the diagram is drawn considering chloride in the center, cesium at the corner. Imagine ये मैं जो कॉर्नर का एटम दिखा रहा हूं, ये अगर मैंने ऐसा कंसीडर किया तो वी कैन क्रिएट अनदर बॉक्स अबाउट इट, वेर इन दिस विल बी एट द कॉर सेंटर, somebody else will be at the corner. So center and corner are with respect to each other. What I mean, let me explain it with a different diagram, those who are not convinced with what I said. Imagine our system, what we saw right now was like this. This is the cubical system we saw. And here we had the cesium atom. Here we had chloride atoms, let us say. So now when we are considering this diagram, this is my body center and these are the corners. Now you imagine that we are considering another system like this, जिसमें अभी आप सोचो क्या हो सकता है. ये कॉर्नर वाले एटम्स है और ये मेरा बॉडी सेंटर है. सो बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर सीइंग इन विच डायरेक्शन. सो माय फर्स्ट डायग्राम, cation was body center, anion was corner. In my second diagram, cation is corner, anion is body center. Has everyone followed what I said? जिनको चाहिए ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. सीजियम क्लोराइड स्क्रीनशॉट लेके So we rest of the the science we forget about, like the atoms. हाँ, correct, that way. So then both the ways will be right only, na? Same only, that's what I'm saying. So इसलिए मैंने deliberately यहाँ पे आपको देखेंगे तो अलग information दिखेगा. Diagram is this way and description opposite. It's the same thing. Coordination number in any way it's going to be 8. Same way, number of cesium and chloride atom also it's going to be 1. So whether you consider chloride centric system or you consider cesium centric system, coordination number come out to be same only. So this is our system, cesium chloride. There is a very interesting fact you can see here about effect of temperature and pressure. At ordinary temperature and pressure, chlorides, bromides and iodides of lithium, sodium, potassium, rubidium
and few silver halides possess NaCl type of structure. So the coordination number comes out to be 6 is to 6. But when you apply high temperature and pressure, these systems change to cesium chloride system, which is coordination number 8 is to 8. This particular change happens at and above 760 Kelvin. Similarly, ammonium chloride, bromide, and iodide transforms cesium chloride into NaCl at these lower temperatures. So basically, NaCl cesium chloride, they are interconvertible system at certain temperature. NaCl convert into CaCl at high temperature, CaCl to NaCl at low temperatures. This question was asked in 2019 JE exam. At 760 Kelvin, what conversion happens? We come to zinc sulphide system, which is a totally different type of system. This is going to be a proper face-centered cubic, in fact, wherein the blue circles, what you see, they are sulphide ions. They will make the cubic close packed, matlab face-centered cubic. Sulphide ions are going to form the system. Zinc ions will get surrounded. Now, if you see for sample here, zinc ion, and you can see this is in a part of 4 sulphide ion center. So this is present in a tetrahedral hole of these 4. अभी ये देखो आप, ये 4 एटम्स का ये टेट्राहेड्रल होल है, यहां पर एक है. ऐसे ही एग्जैक्टली नीचे के टेट्राहेड्रल होल में आपको दूसरा सल्फर मिलेगा. वैसे ही सेम यहां पर इस टेट्राहेड्रल में एक, नीचे वाले टेट्राहेड्रल में दूसरा. सो ऑलवेज हमेशा आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेट्राहेड्रल होल्स रहते हैं. दैट्स हाउ द डबल नंबर इज सीन. Rest everything what we used to do earlier, same way in for calculation. Corner वाले का contribution 1/8, face centered contribution 1/2. All those things what we did in first lecture, they are applicable here. So these were all the systems of, if you remember, AB type system, one cation, one anion in the formula. Diamond possesses similar structure like zinc sulfide. We will be seeing a diamond answer separately. We come to fluorite structure. Now we start with AB2. इसके दो ही structures है आपको. So in AB2 you have this type of system. Once again you can see in the corners you can see calcium ions. Fluoride are present in the holes. Reason is calcium is a little larger ion than fluoride. So here in this case the system is made from cation. Anions are occupying the holes, opposite of earlier thing. Rest of the information as we do every time. Point wise आप याद रखो, ये बाय हार्ट करो एग्जाम के लिए. Very easy information. अभी आपने जो सिस्टम देखा इसमें cations were at the corners, they were making the face centered cubic. Remember my sentence, cations are forming the face centered cubic system. Now we come to exactly opposite. Anions are making the system, cations are inside the tetrahedral hole. That's why the name of the system is opposite to fluoride, anti-fluoride system. The rest of the things are quite similar. आप अपना अगर नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट्स को आप थोड़ा रिलेशन में रखो, so you can make your own notes and see what is the relation in them. You will find them easier. We come to the diamond structure, which was like zinc sulfide as we said. लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स ही हैं. जिंक सल्फाइड में एक कैटायन एक एनायन था, तो स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड जैसा, लेकिन सभी एटम्स सेम साइज के. दैट इज द डिफरेंस. Otherwise, most of the things are similar. This question was asked in 2020 NEET last year. Diamond structure. I'm
टचिंग अ पार्ट हियर कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन, लेकिन इसके डिटेल आप लोग करोगे फिजिक्स में, द चैप्टर ऑफ डाइफ्रैक्शन. Bragg, father and son, both these people work together on the X-ray analysis of crystals. In fact, हम लोग को जो आज क्रिस्टल के बारे में पता है, एफसीसी, बीसीसी एंड ऑल, ये सब ये ब्रैग लोगों ने ढूंढ के निकाला. जितने क्रिस्टल उस टाइम पे पता थे, उन्होंने सबके एक्सरे फोटोग्राफ लेके उसको कन्वर्ट किया, जो हम लोग आज देखते हैं एज बीसीसी एंड एफसीसी. तो हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सरे फोटोग्राफ into a crystal unit cell was taught to the world by these two people. They got a Nobel Prize in physics for it. So how to do the analysis? They used basically X-rays. Now their imagination was something like this. Let me explain it, then I will show you the diagram and all. When we consider a particular crystal system, let us go back to a very simple level. Like this is level A of atoms. दिस इज अनदर लेवल ऑफ एटम्स. हम लोग सबसे पहला सिंपल वाला सिस्टम लेते हैं जो हम लोगों ने पहले सुना था, ए टाइप ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये समझने के लिए इजी है. सो व्हाट दीज पीपल इमेजिन इज, दिस इज वन level of atoms here, then there is a second level of atoms, perhaps a third level of atoms. Imagine that you are bombarding an X-ray on this. So the moment an X-ray is bombarded here at a certain angle, this X-ray beam is going to get reflected. Similarly, there will be another such X-ray parallel to it, perhaps, will fall on this one, and this will also get reflected from it. Have you done the diffraction, interference things and all in physics? Start हुआ है सबका? No, sir. No, sir. Okay, so suppose when we consider rays, इसमें ये जो रेज होते हैं, यू कैन इमेजिन देम लाइक व्हाट दे कॉल इन फिजिक्स एज स्फेरिकल वेव फ्रंट्स. सो दिस इज लाइक अ वेव फ्रंट, व्हाट यू कॉल, मतलब बेसिकली वेव्स, इसको उन्होंने नाम दिया था वेव फ्रंट. तो अभी ये वेव्स इस तरह से जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. सो व्हेन दिस वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड, इमेजिन व्हाट हैपेंस. ये आपका पहला वेव है जो फर्स्ट एरो मैंने ड्रॉ किया है, और ऐसा ही आपके पास दूसरा वेव है जो इस तरह से जा रहा है. So when these waves are going, you can see they create an interference pattern here. So आपका जो resultant wave रहेगा वो इस तरह से रहेगा. So आपको जो एक resultant wave दिखेगा यहाँ पे, वो resultant wave ऐसे इस तरफ कहीं से जाएगा. These people imagined that these things are happening in a crystal system. और ये जो दो प्लेन का जो डिस्टेंस है, दैट इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी. फिर ये जो फर्स्ट लेवल है एटम्स की, वो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, और जो एक्सरेज हम लोग इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है लैम्डा. आई विल सजेस्ट इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, और इससे हम लोग अभी ब्रैग इक्वेशन देखेंगे, व्हाट दिस पीपल डिस्कवर्ड. आप लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे फिजिक्स में इन अ सेक्शन ऑफ लाइट एंड मॉडर्न फिजिक्स. सो उसी डायग्राम को हम लोग ने, ये मुझे अच्छा एक डायग्राम मिला था नेट पे, वो दिखा है. एटॉमिक प्लेन्स का डिस्टेंस इज डी, वेवलेंथ लैम्डा, एंड दे आर स्ट्राइकिंग एट द सरफेस क्रिस्टल एट एन एंगल थीटा. इसका एटॉमिक लेवल का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया है. फिर इसका आपको डेरिवेशन भी करना है फिजिक्स में, यहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन नहीं है. फाइनल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन इज 2d sin theta equal to n lambda, where first level of atoms is n, which they called in that time as order, then second, third. D is this interplanar distance, theta is this angle, what is incident or reflection angle, lambda is the wavelength of the light. हम लोग को केमिस्ट्री में इससे ज्यादा ब्रैग्स इक्वेशन का कुछ भी नहीं करना है. आप लोग को इससे ज्यादा डिटेल और इसके पहले की डिटेल फिजिक्स में करने को होंगे. So based on this, we have some numerical problems which are absolutely given only in the JEE book so far. नीट के बुक्स में ये पार्ट नहीं है.
तो नीट वालों सिर्फ थियरी करो आप, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक तो कभी पूछे नहीं है उन्होंने, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन एनसीईआरटी केमिस्ट्री, इट इज देयर इन एनसीईआरटी फिजिक्स बेसिकली. चलो वॉच दिस लास्ट 2-3 प्रॉब्लम्स एंड द टॉपिक इज ओवर. Wavelength of X-rays which gives a diffraction of 2 theta angle at 16.80 degree. First order diffraction with interplanar distance is 0.200 nanometer is how much? So let us see. उन्होंने 2 theta दिया है अपने को 16.80. So theta will be half of it. So n lambda equal to 2d sin theta. अभी हम लोग को क्या क्या चाहिए? Wavelength पूछा है. First order. So 1 into lambda is equal to 2 into d sine of 8.40. That gives us the final answer. So अगर ये वेवलेंथ हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को ये डिफ्रैक्शन पैटर्न सर्टन मिलेगा. इसमें केमिस्ट्री आपको कुछ दिखेगा नहीं, लगभग फिजिक्स जैसी प्रॉब्लम्स है. सेकंड वन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन. द मोमेंट यू सी फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब है n इक्वल टू 1. वेवलेंथ दिया हुआ है 1.54, एंगल दिया है, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है. हम लोग जो आपके पहले के बुक्स में, पहले के चैप्टर में करते थे ना, जिसमें हम लोग इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, रेडियस, ये सब जो हम लोग करते थे, एज लेंथ, वो सब मेजरमेंट ये प्रॉब्लम में से आता है. इससे हम लोग फाइंड करते हैं कि वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, ये सब डिस्कवरीज ये प्रॉब्लम की वजह से हुआ है. दिस इज द एक्चुअल मेजरमेंट. आई एम शोइंग यू द प्रॉब्लम, क्वाइट एन इजी वन. आई हैव डन लॉट ऑफ शॉर्टकट्स हियर, कन्वर्जन्स एंड एवरीथिंग. मैंने आपको फाइनल आंसर दिया, एक्चुअली आंसर आपका पिकोमीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. So won't D differ a lot? Okay, like मतलब suppose you have one atom only, but then you put the X-ray on it, won't it go into a higher level because of the energy? no, X-ray, because of X-rays, atoms, electrons or atom do not go into any higher level. That for that we need cathode rays or some very high level light beam, जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 11th स्टैंडर्ड में करते थे. With X-rays you cannot do all these things. X-rays are comparatively lesser energy than all the other beams. That is Okay, why sir. we can use X-rays to take a photograph of our bones also. They are that way harmless. Of course आपके पास what they call soft X-ray and hard X-ray ऐसा रहता है. सॉफ्ट एक्सरे जो हम लोग मेडिकल एनालिसिस में या फिर यहाँ पर यूज करते हैं. हार्ड एक्सरेज आर यूज यू नो फॉर व्हाट? कटिंग डायमंड्स. सो एक्सरेज कैन बी सो हार्श दैट दे कैन कट अ डायमंड आल्सो. ऑफ कोर्स वो एक्सरेज रेडिएशन हम लोग ये यहाँ पर एनालिसिस में या हम लोग बोन के फोटोग्राफ में यूज नहीं कर सकते. तो ऑलरेडी हैव अ फ्रैक्चर एंड यू आर गोइंग फॉर अ फोटोग्राफ, हाउ कैन यूज अ हार्श एक्सरे? पूरा काम खत्म कर देगा. चलो लुक एट दिस वन. अब ये सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, ज्यादा नंबर्स इसमें नहीं आएंगे. टू ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पीक फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न, interplanar distance is equal to the wavelength of X-ray. What should be the angle of incidence? See, this is our basic Bragg's equation. उन्होंने बोला है कि interplanar distance is equal to the wavelength. So D equal to lambda. And कुछ बोला नहीं तो हम लोग हमेशा ऑर्डर 1 लेते हैं. So when you cancel this, lambda and lambda will get cancelled. 1/2 is sin theta. So what should be the angle? Sin theta का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? Third. 30. So 30 degree is your angle. So basically theta should be 30 degree, not sin theta, of course. यहाँ पे correction मैं आपको दे दूंगा. I hope this topic is little different one. You can see quite an easy and scoring for the exams. Acha, one moment before we close for today's class. In the afternoon I said about the offline exam. तो जेई के लिए हम लोग फिलहाल तो कोई ऑफलाइन एग्जाम ये वीक में नहीं या ये मंथ में नहीं रख रहे हैं. नेक्स्ट मंथ में वी विल सी. एंड फॉर नीट, सिंस राइट नाउ वी आर हैविंग, देखो अभी 7th So, का so एक this, एग्जाम है. sorry, जस्ट sorry. Yeah, लेट मी एक्सप्लेन. 17th, 14th, 21st एंड 28th, दीज आर दी डेट्स ऑफ अगस्त. तो यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का टेस्ट है जो डीपीपी नंबर 1 to 3 पर बेस्ड है.
फिर 21st को वी आर नॉट कीपिंग एनी टेस्ट बिकॉज ऑफ केसीज एग्जाम. 28th वी विल बी कीपिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये मैंने आपको अनाउंस किया था नीट वालों के लिए ऑफलाइन, जो फिलहाल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं. We will be having an offline test on the next turn after that. This will be 5th of September. I hope my date is correct. 1, 2, 3, 4, yeah, 5. This is going to be Sunday, and you will have a combo test on that day, because we thought afterwards that keeping one chapter test, क्योंकि सभी टीचर्स के वन चैप्टर आ रहे हैं, तो वन चैप्टर के लिए क्लास में बुला के टेस्ट लेने में कोई मजा नहीं आएगा. तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्बो टेस्ट रखेंगे. ये पोर्शन जो भी मैं दे रहा हूं ये सबके लिए कॉमन है. दिस इज गोइंग टू बी पी ब्लॉक ग्रुप 16, 17, 18 प्लस डी ब्लॉक प्लस एफ ब्लॉक. This is like your full inorganic chemistry of 12th standard. You can see almost, except coordination chemistry, everything is involved. और ये सबके लिए है ना? ये टेस्ट सबके लिए है. नीट वाले सिर्फ प्यार से हमारे क्लास में आके टेस्ट देंगे. जेई वाले अपना रेगुलर कॉलेज डोर्स पे देंगे. Okay, all my NEET students will be coming. We will be giving you, those who are with Harshad sir, those who are with Sameer sir, जो है आपको क्लासरूम का ब्रेकअप मिलेगा, आपको कौन से क्लास में जाना है. I will give you that also in our group also. We will be giving your time. So जैसे आपका मेरे स्टूडेंट्स का किसी का कॉलेज डोर्स पे होता है, कोई शायद क्लास प्रो पे देता है, शायद कुछ ऐसा है आपका. तो जो आपका ऑनलाइन मोड है उसकी जगह पे आप पेपर पेन टेस्ट ये देने वाले हो. सिर्फ जेई वालों का वैसे भी पेपर पेन टेस्ट होता नहीं है, इसलिए कॉलेज डोर्स पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी माइट कॉल जेई स्टूडेंट्स टू क्लासरूम फॉर वन डे फॉर अ टेस्ट, बट नॉट ऑन दिस डे, सम अदर वन, दैट वी विल लेट यू नो. सर जेई का समीर सर ने आई थिंक मैसेज किया था 28th को वी हैव टू कम ऑफलाइन. हाँ, लेकिन वो कैंसिल किया है, फिलहाल कैंसिल किया है. फिर भी तो आप सर लोग दिस फिर से मंथ एक बार नो लाइक ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन क्लास पर टेस्ट, भी नहीं है, राइट? हाँ, घर पे ही टेस्ट रहेगा जेई वालों का. नीट वालों का भी ये मंथ में, अगस्त में नहीं रहेगा, सितंबर. हम लोग अभी आपको हर मंथ में जो आपका एक बड़ा टेस्ट लेंगे वो आपको क्लासरूम में बुला के लेने वाले हैं, इतना समझ लो. ये टेस्ट कॉम्बो टेस्ट मतलब क्या होगा, उस दिन आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो का तीनों का पेपर साथ में रहेगा. एंड देन यू हैव टू गिव द कॉम्बो टेस्ट 3 hours, mostly 2 to 5 we are going to keep, or we might keep it little earlier also, let us see. Okay, अभी फिलहाल बाकी का सब छोड़ दो और सिर्फ पोर्शन पे ध्यान दो. आपको पी ब्लॉक पूरा, डी ब्लॉक कंप्लीट और एफ ब्लॉक कंप्लीट करना है. दिस विल बी अ पोर्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट टेस्ट. अभी आपके नेक्स्ट मंथ में जो टेस्ट आएंगे उसका तो पोर्शन में आपको भेज दूंगा वैसे ही, लेकिन ये पहले वाले का टेस्ट अभी अनाउंस कर रहा हूं मैं. सर तो ये मंथ का टेस्ट का जो पहले भेजा है वही है क्या